Now, the debate over using religious word Om in yoga asanas has now again reignited. On International Yoga Day, Congress's Abhishek Manu Singhvi put out a tweet over Om chants during performing the asanas. Singhvi in his tweet said that neither Om chants make yoga more powerful, nor taking the name of Allah makes yoga less powerful. Reacting to Singhvi's tweet, Ramdev said that in yoga one feels the presence of the divine. He advised Singhvi to perform yoga as it encompasses Omkar, Khuda and Allah as well. He said that one must do yoga to feel the God of his or her faith. Madhya Pradesh Chief Minister meanwhile too slammed Singhvi, accusing the Congress of doing politics over yoga. सिंघवी जी हैं, उनका ट्वीट है अभी कुछ देर पहले का। वो ट्वीट में ये कह रहे हैं कि ओम के उच्चारण से ना तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और ना अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। इस बयान को किस नजरिए से देखते हैं? ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान। देखो, खुदा, अल्लाह, परमात्मा, भगवान, ओंकार, जब ओंकार ही खुदा अल्लाह है तो ओम बोलने में दिक्कत क्या है? और हम किसी को खुदा बोलने से किसी को मना तो नहीं कर रहे ना। लेकिन योग की साधना में ओम कोई व्यक्ति तो नहीं है, कोई प्रतिमा तो नहीं है। कोई कहते मुसलमान पाषाण पूजा नहीं करते, मूर्ति पूजा नहीं करते, तो ओंकार कोई मूर्ति प्रतिमा थोड़ी है। जिसको आप खुदा कहते हो, अल्लाह कहते हो, जिसको हम भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, तो वो कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना, योग ते प्रकट होई में जाना। तो मुझे लगता है इन सबको भी योग करना चाहिए, तो इनको फिर सब जगह एक ही परमात्मा का, एक ही ओंकार का नूर दिखेगा, भरपूर दिखेगा वो सब जगह। भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के सबको अपनी बात अभिव्यक्ति करने की आज़ादी है और स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति ही इस देश की लोकतंत्र की विशेषता है। सबको अपने अपनी बात कहने का अधिकार है। उन्होंने अपने विचार कहे हैं देश को, देश की जनता उन विचारों से कितना सहमत होती है, असहमत होती है, वो विचार कहने से किसी को रोका नहीं जा सकता। लेकिन धर्म के आधार पर इस तरीके से योग को बांटने की कोशिश उनकी तरफ से की गई, ये उनका विचार हो सकता है। इसलिए मैंने कहा कि लोकतंत्र के अंदर अभिव्यक्ति की आज़ादी है, यही हमारे भारत के लोकतंत्र की विशेषता है। जो योग है वो मेड इन इंडिया नायाब गिफ्ट है, वो दुनिया की सेहत के लिए, दुनिया के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत ही परफेक्ट व्यवस्था साबित हुई। और योग आज का तो है नहीं, सदियों पुराना है। और कोरोना काल में जहाँ पर एक तरफ मेडिसिन ने काम किया, वहाँ मेडिटेशन ने भी बहुत बड़ा अपनी भूमिका निभाई है। इसलिए अल्लाह और ओम के चक्कर में आप योग को मत फंसाइए। योग योग है और योग के साथ सब लोग हैं। अभिषेक मनु सिंघवी हैं कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि ओम के उच्चारण से ना तो योग शक्तिशाली होगा, ना अल्लाह के उच्चारण से योग कमजोर होगा। इसे आप अब पता नहीं ऐसे अवसरों पर क्यों विवादास्पद बयान देते हैं। ये स्वतः सिद्ध है कि योग शरीर को निरोग करता है, ऐसे विषय को विवाद में नहीं डालना चाहिए। आज योग पूरा विश्व मना रहा है, पूरा विश्व मोदी जी का नाम ले रहा है, भारत का नाम ले रहा है। उनको ये तकलीफ है या उनको ये तकलीफ है कि बहुत सारी विदेशी कंपनियां जो हमारे देश में दवाइयां बेचती हैं, उनको ये तकलीफ है कि अगर देश का हर व्यक्ति योग से प्रेरित हो जाएगा, योग करने लग जाएगा, उसका शरीर ठीक होगा, तो आज शायद उसको दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो दवाइयाँ इनको स्पॉन्सर करती है ऐसा बोलने के लिए। तो इनकी क्या तकलीफ है मैं जानता नहीं हूँ। Meanwhile, amid this bizarre argument of Congress leader Abhishek Manu Singhvi over Om chants on Yoga Day, Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan now says that yoga should not be connected to religion or spirituality. Speaking at the Yoga Day celebrations, the left Chief Minister says that yoga must be seen as healthcare system and not linked to any religion. He further adds that if yoga is confined to religion, a vast majority will be denied the benefits of yoga. The efforts taken by Yoga Association of Kerala to retain the secular nature of yoga and spread the message is commendable, says the Chief Minister Pinarayi Vijayan. ആരോഗ്യകരവുമായ ഒത്തുചേരലാണ് യോഗ എന്ന പദം കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ശാരീരികാരോഗ്യം മാനസികാരോഗ്യത്തിനും മാനസികാരോഗ്യം ശാരീരികാരോഗ്യത്തിനും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഇവ പരസ്പര പൂരകമാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സമഗ്ര കാഴ്ചപ്പാടാണ് യോഗയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് പിന്നിലുള്ളത്. ആത്മീയതയുമായോ ഏതെങ്കിലും ഒരു മതവുമായോ ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണേണ്ട ഒന്നല്ല ആധുനിക യോഗ. അതിനെ ഒരു ആരോഗ്യ പരിപാലന രീതിയായി തന്നെയാണ് കാണേണ്ടത്. അതിനെ ആത്മീയമായോ മതപരമായോ കണ്ടാൽ വലിയൊരു വിഭാഗത്തിന് അതിൻ്റെ സത്ഫലം ലഭ്യമല്ലാതെ വരും. മതത്തിൻ്റെ കളിയിലൊതുക്കിയാൽ
Now, as the nation celebrates International Yoga Day, politics erupts over BJP MP Pragya Thakur's session with MPs at Yoga Day event organized by Lok Sabha Secretariat today. In fact, Bhopal MP Pragya Thakur and Malegaon blast accused. Pragya addressed one of the 4 online sessions organized by the Lok Sabha. Congress, which has accused Pragya of Hindu terror, has questioned her participation in Yoga Day event. Taking to Twitter, the Congress MP Manikam Tagore asked whether Prime Minister Modi has changed his heart now since Pragya Thakur has been made the chief guest for all MPs at the Lok Sabha Yoga event. He's also shared a clip of Prime Minister Modi's interview wherein he is asked about Pragya Thakur's comments glorifying Gandhi's assassin Godse as a patriot. Prime Minister had then said that he won't be able to forgive Bhopal MP fully over that comment. Now, it's the 7th International Yoga Day today with Yoga for Wellness, a motto aligned to the current preoccupations. Prime Minister Modi, in his Yoga Day address, emphasized on the importance and benefit of the old age practice. Prime Minister said that yoga has come as a ray of hope in this crucial time of COVID and that he wished health and wellness to everyone in this world. Prime Minister further said that yoga has taught us how to fight back COVID, and it also helps COVID patients recover faster. Prime Minister in his address also stressed on mental health, saying that yoga not only aids physical health but mental health as well. The Prime Minister has also said that in collaboration with WHO, India has taken another important step. Now there will be M-Yoga app, which will have yoga training videos in different languages for people across the world. This will help us in our One World, One Health motto. As per reports, as many as 190 countries are observing yoga this year. Let's take a listen to all the reactions pouring in on Yoga Day. Yoga has multiple benefits. It can make our life so much better than what we could even imagine. It can make our body strong. It brings focus to the mind, especially for students. They will simply love it, and because study becomes an effortless process for them then. Today, in this situation of pandemic around the world where mental health is the biggest challenge, depression, anxiety, fear, then these negative emotions are taking over the human life. Yoga is a boon. Yoga is the gift to humanity. It can help us to sail over these tough times. This particular International Day of Yoga is more significant than ever before. Simply because of the pandemic, we have realized as a generation of people how our lives can be just turned upside down. All of a sudden, without warning, the pandemic. So at a time like this, building a vibrant and resilient body, a joyful and focused mind, and indefatigable sense of energy within you is most essential to fight these external invasions, which scientists are predicting may happen again and again. Still, the pandemic is not over. We cannot say this is post-pandemic. This is pandemic season still. Already we have seen 2 waves in India and across the world, also in many different countries. The authoritative voices in this arena of life of virology are saying this could last much longer than we have imagined. So, it's extremely important that we build a system, we build a body which is resilient and a mind which is balanced and exuberant, so that we can go through these rigors of life with least amount of distortions to our lives. So yoga is a tremendous possibility. Yoga is not a simple form of exercise, this is a complex mechanism, understanding the mechanics of human existence, how we are made and how we can take it to the highest possibility. Now,
Now, India's next phase of vaccination policy kicks off with the centre taking full control of India's vaccination drive from the states. Home Minister Amit Shah is in Ahmedabad to personally review the preparations there. Under the new phase of the vaccination program, the centre will now provide free vaccines to everyone above the age of 18. People above 18 will be allowed to get the jabs at the vaccination centres without prior registration on the CoWIN app. Pre-registration is no longer mandatory as the government and private vaccination centres would provide on-site registration. The central government there has also capped vaccine prices across country. Private hospitals now are allowed to charge a maximum of 150 rupees per dose. प्रधानमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि 21 जून से आज से पूरे देश भर में 18 और उससे ऊपर के आयु वर्ग के सभी लोगों को केंद्र सरकार की ओर से निःशुल्क टीका लगाया जाएगा। मित्रों, ये बहुत बड़ा अभियान है और हमें ध्यान में रखना चाहिए कि दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम एंड इट इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट वैक्सीनेशन प्रोग्राम। मित्रों, भारत की जनता बहुत गहराई से देख रही है, काम करने वाले को भी देख रही है और काम में अटकन लगाने वालों को भी देख रही है और जो लोग भटका रहे हैं उनको भी देख रही है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस महाअभियान में पूरी ताकत के साथ लगेगा और भारत को वैक्सीन युक्त, कोरोना मुक्त इस काम को करके हटेगा। इस बात को हमको समझना चाहिए। भारत में सभी नागरिकों को भारत सरकार अपने खर्चे से, केंद्र सरकार के खर्चे से सभी नागरिकों को मुफ्त में टीकाकरण का अभियान आज से तेजी पकड़ रही है। करोड़ों लोगों को प्रति माह टीका लगाया जाएगा। देश में सरकारी बेसरकारी अनेक संस्थाओं में टीकाकरण की अभियान शुरू हो जाएगी। अगले दीपावली या दिसंबर अंत तक भारत के सभी नागरिकों को टीका लगाने की काम पूरा कर दिया जाएगा। Now let's take a quick listen to what Prime Minister Narendra Modi had said on free vaccination drive that's been initiated by the centre. 2 सप्ताह बाद 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। 21 जून सोमवार से देश के हर राज्य में 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। The government has now started providing vaccines to those above the age of 18 years as walk-in. So even if you don't have a registration on the CoWIN app, at the government centers, all above the age of 18 can now come directly and get the vaccine. You can see a huge line in West Vinod Nagar Center, which is the Delhi government center. The people here say that the rush is a lot today only because most people could not get a slot and have come in as walk-ins. All these people, they are young and that's why they have come here to take the vaccine. The line is long, but people are moving forward as slots are given to 15 people at a time because a lot of rush is being seen in the vaccination centers. From today, the central government will procure all these vaccines and provide them to the state, and everybody above the age of 18 years can now get free vaccination at the government mandated vaccine centers and can walk in directly without an appointment to get registered over here. With Ashok Banot, this is Milan Sharma for India Today. Walk-in vaccinations for anybody above the age of 18 years has started in the country. In Mumbai, the situation is a little different. Here, people in the age group of 30 to 44 has been allowed since Monday to walk in at the vaccination centers and take vaccinations. Online slot for this age group is also available. It was since May that the 18 to 44 age group had started, but after an interval of more than 1 month in Mumbai, the vaccination for the age group of 30 and 44 has started. It has been divided
50% in online slots, and 50% walk-in bookings. Many beneficiaries are saying that they have had a long wait, but now finally are getting their jabs. With camera person Mangesh Ambre, Mustafa Sheikh in Mumbai for India Today. अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर आज से कोरोना के खिलाफ देश में वैक्सीन वॉर शुरू हुआ है और यहाँ पे ज़्यादातर जो लोग हैं 18+ की आयु के लोग वो अब वैक्सीन लेने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, क्योंकि इससे पहले जब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना था तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, लेकिन अब यहाँ पे ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आज यहाँ पे मुफ्त में ये वैक्सीन और यहीं पे ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया है एक्चुअली, क्योंकि एक तो कोविड का बहुत हमें टेंशन बहुत ज़्यादा था और अभी अगर ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो बहुत बढ़िया चीज़ है एक्चुअली. आई मस्ट थैंक द गवर्नमेंट अबाउट इट. It's highly comfortable, saves time and energy, and thankful to everything, AMC especially. बिल्कुल, लोगों के लिए एक रिलीफ की बात हो गई है, एक शांति की बात हो गई है कि वो यहाँ पे आते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और तुरंत ही उनका नंबर आ जाता है और उनको तुरंत ही टीका लग जा रहा है, क्योंकि कोरोना के खिलाफ ये टीका ही एक आखिरी जरिया है और उसी से कोरोना से बचा जा सकता है, जिसके लिए आज से देश में मुफ्त वैक्सीन की ये शुरुआत ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन के जरिए हुई है. Now, while we're looking at a more seamless process of vaccination drive across the country, it seems like West Bengal is still lagging behind. The vaccine for all policy is yet to be implemented there. The Bengal government has said that they are yet to get more vaccine doses, which is why the delay. India Today's Prema Rajaram with more on that. The vaccine for all policy has not yet begun in state-run SSKM hospital. We are here and we are asking people around. What we know is that the West Bengal government has said that they do not have enough doses for the vaccine for all policy to be implemented, and right now it is only vaccination for those frontline workers, healthcare workers and bus drivers, hawkers and those who are eligible at this point in time, because there are not enough doses, and they've written to the center, the state government about this. As far as people here are concerned, they had to register today and come. I'm going to ask a few people here. आज आप आए हैं वैक्सीन लेने या आप कल लिए थे, लेकिन आज आपके घर से कोई आया है वैक्सीन लेने, उनको रजिस्टर करना पड़ा? जी, रजिस्टर करना, रजिस्टर के बाद ही मिला हम करे थे. What we are hearing is that everybody had to register and come today. They registered on the Common app, came into the hospital premises and had to register again as per the rules and regulations over here. But that is what people are saying, that as far as the vaccine for all policy is concerned, they have no knowledge about it, and they're hoping that in the days to come that this would be more streamlined. With camera person Shyam Sundar Ghosh, Prema Rajaman, Kolkata for India Today. Now, as cases begin to dip in the national capital, more restrictions have been lifted in Delhi. Delhi Disaster Management Authority issued a notification on Sunday allowing all restaurants to now be open with 50% seating capacity from 8 a.m. to 10 p.m. Bars and lounges will be open at 50% capacity from noon to 10 p.m. Now, in this phase of unlock, parks, gardens, golf clubs have also been reopened. However, schools, colleges and other educational institutes will continue to remain shut. Gyms, theatres, swimming pools, stadiums will also remain shut for a little longer. Social, religious and political gatherings are also prohibited. The fourth phase of unlock in Delhi has begun from today morning, and as you can see, the traffic is back on Delhi roads as private offices open with 50% occupancy and government offices have 100% attendance for Group A staff, while the rest of the staff is on 50% work from home. In markets, pubs, restaurants, bars, everything is open. However, gyms still remain closed, banquet halls still remain closed, and there is a restriction on the number of people who can attend weddings as well. Only 20 people will be allowed. Malls have opened, but cinema halls remain closed. Parks have finally opened for public to go and sit in the gardens. The fourth phase of unlock is here, but the government has still warned that if proper COVID protocols are not maintained, the third phase is not far behind. In New Delhi, with cameraman Pavan, this is Anisha Mathur for India Today.